Hello बच्चों, how are you? Hope you enjoying the winter. So प्यारे बच्चे लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग जे एडवांस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा आपके सिलेबस आपके माइंड में होगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में, लिखने में, समझने में। When we analyze the syllabus, JEE main, advance, then only we have to easily qualify the exam. तो यहाँ पे इजली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो प्यारे बच्चे लोग, सबसे पहले जे एडवांस के सिलेबस को केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सो प्यारे बच्चे लोग, अगर जनरल टॉपिक्स की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स। दुनिया में हर चीज़ एटम मॉलिक्यूल से बना होता है। किसी भी चीज़ को अगर सर्टेन लेवल पे आप ब्रेक करोगे एटम ही मिलेगा, एटम को कंबाइन करोगे मॉलिक्यूल मिलेगा। डाल्टन सर की एटॉमिक थ्योरी जानिए। एटम आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम नाइदर ब्रेक नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएट। सो इस तरीके से हर एक चीज़ को समझना है। मूल कंसेप्ट, 1 मोल इक्वल टू 6.022 10^23 पार्टिकल। केमिकल फार्मूले कैसे बनते हैं? कोई भी आपका सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हर एक चीज़ को समझना है, हर एक चीज़ को फार्मूलेट करना है। व्हेन वी एनालाइज, व्हेन वी एनालिसिस आवरसेल्फ, हर एक चीज़ को समझते हुए क्या वो कहना चाह रहा है कंसेप्ट, उस पर हर एक जितने भी पब्लिकेशन के MTG हो गए हैं, चाहे जितने पब्लिकेशन के आपका उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको लगाइए। सो यू कैन ईजिली अचीव द टारगेट। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, हमेशा जीवन में एक टारगेट को लेके वर्क करना है। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, व्हेन यू स्टार्ट विथ योर सेल्फ लाइक दिस टारगेट यू हैव टू अचीव, सो जस्ट वर्क ऑन इट। Chemical equation calculation based on mole, concept and stoichiometry involving common oxidation reduction, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड को बेस से मिला दो, न्यूट्रलाइजेशन। HCl हो गया, NOH मिला दो, आपका H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमको ये चीज़ सीखना है कि एसिड बेस मिलने से आपका साल्ट एंड वाटर बन जाता है। हर एक चीज़ को कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिव रहेगा, लोअर रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। हर एक चीज़ को आपको क्या करना है, फील करना है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द साइंस देन योर लाइफ विल रियली इंजॉयबल। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, वंडर वाल इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड MP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड देयर रिलेशन विद टेम्परेचर, लॉ पार्शियल प्रेशर, क्या क्या लॉ होंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, टाइप्स, डिस्टेंस, डिपेंडेंस एंड देयर इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, लिक्विड वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सब आपको सीखने हैं। जिसको मान सकते हैं यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किस तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसमें प्यारे बच्चे लोग देखिएगा, बोर्ड्स मॉडल हो गए, स्पेक्ट्रम हो गए, हाइड्रोजन एटम हो गए, वेव पार्टिकल हो गया, डुअलिटी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेगा तो पोजीशन एंड मोमेंटम कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल का एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन H/4 पाई। सो दिस इज कॉल्ड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस तरीके से वो वर्क करता है। एनर्जी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल देखेंगे, स्पिन, मैग्नेटिक, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
प्लॉट, तो उसका वेव फंक्शन का हम लोग साई का ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, ऑबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होल्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब उसमें हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चे लोग कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होता है, क्या क्या उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, orbital overlap and covalent bond, hybridization involving s, p and d orbitals only, molecular orbital energy diagram for homonuclear diatomic species up to neon, inert gas neon आपको आगे नहीं ले जा रहा है, Na2 Mg2 Al2, ठीक है। चलिए आप लोग अभी 11th-12th में हो तो आगे की दुनिया आगे बढ़ के मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से द लेवल यू आर उतना ही मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। चलिए, तो जितने भी तरीके की क्वेरी है हमारे सामने पूछिए, वी विल आंसर योर ऑल योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी जब भी आप लोग देखो बच्चे लोग तो वहाँ पे नेट आपका चेंज मिलेगा। नेट चेंज मतलब कि आपका सपोज करिए कि चार्ज का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। जब चार्ज का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे आपका पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। सपोज करिए आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का चार्ज कुछ है और इलेक्ट्रोनिगेटिव का चार्ज कुछ है, तो उनमें जो भी डिफरेंस आएगा, तो अगर नेट आपका जीरो नहीं हो रहा है तो आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चे लोग देखेंगे विस्पर मॉडल, ठीक है। एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिनियर, एंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल, स्क्वायर, पिरामिडल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा और अमेजिंग आपका टॉपिक है। हीट के बारे में जानेंगे, एनर्जी के बारे में जानेंगे एंड किस तरीके से वो एनर्जी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताएगा। सो सारे को सीखेंगे। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, इंटरनल एनर्जी, वर्क प्रेशर, ओनली हीट, ठीक है। PV डायग्राम हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड स्टेट, हेस लॉ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन एंड लैटिस इंथैल्पी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को सीखना है प्यारे बच्चे लोग, इक्विलिब्रियम में आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में किस तरीके से हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल इंटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम सीखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp एंड Kc एंड रिएक्टेंट कोशेंट को सीखेंगे। रिएक्शन कोशेंट जैसे कि आपका किस तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, किस तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन वर्क करता है। लीचेटेरियल प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे। सोलुबिलिटी, प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे कि अगर सपोज करिए कोई भी आप लोग सेमी स्पेसिस को ऐड करते हो, NH4+ हो गया, H+ हो गया, तो उस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग जानेंगे। pH एंड बफर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। एसिड्स एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरिश कंसेप्ट, किस तरीके से आपका ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एसिड को डिफाइन करता है, लॉरी कंसेप्ट किस तरीके से डिफाइन करता है, लेविश कंसेप्ट किस तरीके से आपका डिफाइन करता है। कुल मिला के यही है, H+ आपका रिलीज करना यानी कि आयन को देना, ठीक है, एसिड कहलाता है, और आयन को एक्सेप्ट करना बेस कहलाएगा।
हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। नेक्स्ट हमारा कल आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क एंड नर्स इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, कोल्डवेस लॉ, बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फ्यूल सेल, कैरोजन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग को सीखना है केमिकल काइनेटिक्स। सो प्यारे बच्चे लोग, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा, किस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वर्क करता है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका बताता है किस रेट से सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, उस तरीके से। सो नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, differential and integrated rate expression for zero and first order reaction, temperature dependence of rate constant, Arrhenius equation and activation energy, catalysis के बारे में पढ़ना है आपको, homogeneous and heterogeneous, activity and selectivity of solid catalyst, enzyme catalyst and its mechanism। अब जो क्लास 12 के आपके जो टॉपिक हैं सॉलिड स्टेट, सो इन दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, 7 क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, ठीक है, सेल पैरामीटर, किस तरीके से आपका इज लेंथ होता है, एंगल होता है, वो आपको पढ़ना है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल, packing in FCC, BCC and SCP lattice, nearest neighbor, ionic radii and ionic radius ratio हम लोग को पढ़ना है, cation अपॉन anion, R plus R minus, point defect। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सोल्यूशन, हेनरी लॉ, रॉड्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन क्या होगा बच्चे लोग, अगर बोलेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो जीवन में खूब मेहनत करिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। वंस यू स्टार्टेड, जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट कीप लर्निंग, 16 आवर 15 आवर पढ़ते रहो, 12 घंटा 14 घंटे, you will get the success at the end of your work। Osmotic pressure, want of factor we have to study। Next point is surface chemistry, elementary concept of adsorption, physiosorption and chemisorption, French adsorption, isotherm, colloids, types, method of preparation and general property, elementary ideal of emulsion, surfactants and mixtures, only definition and example आपको सिंपल आपको जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties, modern periodic law and the present form of periodic table, electronic configuration of element, periodic trends in atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, valence oxidation state, electronegativity and chemical reactivity। Next we have to study hydrogen, position of hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, preparation, properties and usage of hydrogen, hydrides, ionic, covalent and interstitial physical and chemical properties of water, heavy water, DTO की properties आप सीखने हैं। Hydrogen is the most abundant element in the nature. Many times question come, this is the
abundant element, so hydrogen you can pick it. हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन H2O2 रिएक्शन आपको सीखने हैं. यूज एंड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. तो बहुत सारे आपका हाइड्रोजन फ्यूल, आपका ग्रीन एनर्जी के बारे में भी आजकल रिसर्च चल रहे हैं. इस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर वाटर डाइहाइड्रोजन halogen acids, their reducing nature, including solution in liquid ammonia. Usage of these elements, general characteristics of their oxides, hydroxides, halides, salts of oxoacid, anomalous behavior of lithium and beryllium, preparation properties and usage of compounds of sodium, sodium carbonate, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate and calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate, calcium sulfate, p block elements we have to know. Oxidation state and trends in chemical reactivity of element किस तरीके से ट्रेंड है ग्रुप 13 टू ग्रुप 17. ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा ग्रुप 18 आर्गन वाला. इनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप. देखिए प्यारे बच्चे लोग, जब भी हम लोग सीखते हैं तो हर एक चीज़ को एनालिसिस करना है, किस तरीके से वो आपका कंसेप्ट पूछ रहा है, मतलब कि क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या उसमें आपके पॉइंट हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप 13 रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड्स, अल्कलीज एंड हैलोजेंस, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बोरॉक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम chloride and alums. Usage of boron and aluminium. Group 14 reactivity towards water and halogen, allotropes of carbon and usage of carbon, preparation properties and usage of carbon monoxide. किस तरीके से आपका यूजेज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जोलाइट्स का प्रिपरेशन आपको पढ़ना है. Group 15 reactivity towards hydrogen, oxygen and halogen, allotropes of phosphorus, preparation properties and usage of dinitrogen, ammonia, nitric acid, phosphine, phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, oxides of nitrogen, oxoacid, phosphorus. You have to learn. Next, in the group 16 student, you have to know reactivity towards hydrogen, oxygen and halogen, simple oxides, allotropes of sulfur, preparation, manufacture of properties and usage of dioxygen, ozone, sulfur dioxide, sulfuric acid, oxoacid of sulfur. Group 17 we have to know reactivity towards hydrogen, oxygen and metals, preparation, manufacture, properties and usage of chlorine, hydrogen chloride and interhalogen compounds, oxoacid of halogen, bleaching powder. In the group 18 we have to learn chemical properties and usage, compounds of xenon with fluorine and oxygen, D block element, oxidation state of and their stability, standard electrode potential, interstitial compounds, alloy, catalytic properties, application, preparation, structure and reaction of oxoanions of chromium and manganese. In the student A block element we have to learn lanthanide and actinide contraction, oxidation state, general characteristics.
So now we are moving ahead towards the coordination compound, complex compound. So student, you can ask as many as question. You can ask me on WhatsApp number 70020999161, and whatever the query, whatever the concept you want to discuss with us, we will guide you all points. So join courses and learn with the destiny classes. Coordination compounds, Werner theory, nomenclature, cis trans and ionization isomers, hybridization, and geometries, linear, tetrahedral, square planar, and octahedral of mononuclear coordination compounds, bonding, valence bond theory, CFT, crystal field theory, octahedral and tetrahedral fields we have to know, we have to study. Magnetic property, a spin only, color of 3D series, coordination compounds, ligand, and spectrochemical series, stability, importance, and application of metal carbonyls. Isolation of metals, metal ores and their concentration, extraction of crude metal from concentrated ores, thermodynamic, iron, copper, zinc, and electrochemical एल्युमिनियम, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, किस तरीके से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है. Thermodynamic, iron, copper, zinc we have to know, and electrochemical, aluminum, principle of metallurgy, cyanide process, silver and gold refining. Principle of qualitative analysis. Qualitative analysis we have to know, group 1 to 5. Only Ag plus, Hg2 plus, U2 plus, Pb2 plus, iron 3 plus, chromium 3 plus, aluminum, calcium, barium, zinc, magnesium. Nitrate and halides, excluding fluoride, carbonate and bicarbonate, sulfate and sulfides. Environment chemistry, atmospheric pollution. यहाँ पे आपको बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं. सो वी हैव टू नो व्हाई द कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, किस तरीके से हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एयर, वाटर, ठीक है, लैंड, जितने भी तरीके के पोल्यूशन. तो फर्स्ट नो द पोल्यूशन, कितने तरीके के पोल्यूशन हो रहे हैं, किस तरीके से आपका एसिड व्हेन वी डंप इन द लैंड, व्हेन वी burn lots of fossil fuel, it eject in the air, so getting polluted. So understand the causes, किस तरीके से वो आपके causes हो रहे हैं. So you understand each point, हर एक चीज को सीखते जाओ, जीवन में प्रैक्टिस करते जाओ, you will get it. ठीक है बच्चे लोग, चलिए. Atmospheric pressure, pollution, water pollution, soil pollution, industrial waste, strategy to control environmental pollution, green chemistry. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2 sp3 of carbon, sigma and pi bonds, shapes of simple organic molecules, atomicity, structure and geometrical isomerism, stereoisomerism, and stereochemical relationship. Enantiomer, distereoisomer, meso compound containing only up to 2 asymmetric center, RS configuration we have to know, EZ configuration excluded. Determination of empirical and molecular formula of simple compounds by combustion method only, IUPAC nomenclature of organic molecules, hydrocarbon including simple cyclic hydrocarbon and their monofunctional bifunctional derivatives only, hydrogen bonding effects including resonance, hyperconjugation effect, acidity and basicity of organic compounds, reactive intermediates produced during
homolytic and heterolytic bond cleavage, formation, structure and stability of carbocations, carbanions and free radicals. Next, alkanes we have to know. Homologous series, physical property, melting point, boiling point and density, mass pound volume किस तरीके से अफेक्ट करता है, and effect of branching of on them, conformations of ethane and butane, Newman projection only, preparation from alkyl halides and alipathic carboxylic acid, reaction combustion, halogenation, chlorination, bromination, iodination, ठीक है, including allylic and benzylic halogenation and oxidation, alkenes and alkanes, physical property, boiling point, density and dipole moment, preparation by elimination reaction, acid catalyzed hydration, excluding the stereochemistry of addition and elimination, metal acetylides, reaction of alkenes with cheminophore and ozone, reduction of alkenes and alkynes, electrophilic and addition, reaction of alkenes with X2, HX, HOX, X halogen, effect of peroxide on addition reaction, cyclic polymerization reaction of alkynes. So all things just make it note, proper note and revise it. You will get the concept. Benzene, C6H6 structure, electrophilic substitution reaction, halogenation reaction, nitration, sulfonation, vital club alkylation, acylation, effect of directive group monosubstituted in these reactions, phenols, physical property, preparation, electrophilic substitution reaction of phenol, halogenation, nitration, sulfonation, Raimel-Taimer reaction, Kolbe reaction, esterification, etherification, ठीक है, aspirin synthesis, oxidation and reduction reaction of phenols. Alkyl halides, rearrangement reaction of alkyl carbocation, Grignard reaction, nucleophilic substitution reaction and their stereochemical aspects. Next student we have to know alcohols. So how the alcohol work, physical property, reaction, esterification, dehydration, formation of alkenes and ethers, reaction with sodium phosphorus halides, ZnCl2, concentration reaction, Cl thionyl chloride, conversion of alcohols into aldehydes, ketones and carboxylic acid, ethers, preparation by Williamson synthesis, one of the best method to prepare the ether, CO bond cleavage reaction, aldehyde and ketones, preparation of aldehyde and ketones from acid, chlorides and nitriles, aldehydes from ester, benzaldehyde from toluene and benzene, reaction, oxidation, reduction, oxidation, addition of oxygen, reduction, loss of oxygen. ठीक है बच्चे लोग, very simple, you have to understand every point, you have to know, you have to study. Okay student, so now the next point we have to know haloform reaction, nucleophilic addition reaction with RMGX, NHSO3, HCN, alcohol and amine. Carboxylic acid, physical property, preparation from nitriles, Grignard reagent, hydrolysis of ester and amides, preparation of benzoic acid from alkyl benzene, reaction, reduction, halogenation, halogen group will add, formation of ester, acid chlorides and amines, preparation from nitro compounds, nitriles and amides, reaction Hofmann bromide degradation, Gabriel phthalimide synthesis, reaction with nitrous acid, azo
coupling reaction of diazonium salt of aromatic amines, Sandmeyer, and related reaction of diazonium salt, Carville reaction, Hinsberg reaction, test, alkylation and acylation reaction. Haloarine, we have to understand reaction fitting, wood fitting reaction, wood fitting, nucleophilic aromatic, substitution in haloarine and substituted haloarines excluding benzyl mechanism and Schiene substitution. Next student, we have to know in the chemistry biomolecules, carbohydrates, classification of mono and disaccharides, glucose and sucrose, oxidation reduction, glucoside formation and hydrolysis of disaccharides, sucrose, maltose, lactose, enomers. Protein, amino acid, peptide linkage, structure of peptide, primary and secondary types of proteins, fibrous and globular. Nucleic acid, chemical composition and structure, DNA and RNA, polymers, we have to know types of polymerization. Poly means many, mer means unit, many unit. Monomer, mono means one, mer means one unit. So when the monomer join together, they form the polymer. ठीक है स्टूडेंट. Types of polymerization, addition, condensation, homo and copolymer. Homo means one type, copolymer means different type. Natural rubber, cellulose, nylon, Teflon, bakelite, PVC, biodegradable polymer, application of polymers. And in the last point of the chemistry in everyday life. So आपको लिखने पड़ेंगे multiple times. You have to write the syllabus and then go through the syllabus and then solve the PYQ and then you will qualify the exam. So that is the syllabus, PYQ and then MCQ. So just go ahead with these three skill and you will qualify. Drug target interaction, therapeutic action, an example, excluding structures of antacid. ठीक है. इंडाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं एंथीशमाइन, ट्रैंक्विलाइजर, शांति के लिए हम लोग यूज करते हैं कामनेस, एनाल्गेस्टिक, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. ओके, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टूड. आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर होंगे. सोप डिटर्जेंट एंड क्लेंजिंग एक्शन, मिसल वगैरह फॉर्मेशन होगा. प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीथेन बनाइए, इथेन बनाइए, प्रोपेन बनाइए. डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन. डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, hydroxyl, alcohol and phenolic carbonyl, aldehyde, ketone and carboxyl amino and nitro group. Practical organic chemistry you have to know. So this come under the chemistry. आपका एडवांस केमिस्ट्री में इतने चीज पढ़ने हैं. So next will mathematics, then next will be physics. So this much of the concept anyhow you have to know. So you have to study, you have to read and you have to analysis. Mathematics sets, relation and function sets, their representation, different kinds of set, empty, finite, infinite, algebra of sets, intersection, complement, difference and symmetric difference of the sets and their algebraic property, De Morgan law of union, intersection, difference of the finite number of sets and practical problem based on them. Cartesian product of finite set, order pair, relation, domain and codomain of the relation, equivalent relation, function of a species, case of a relation, function of mapping, domain, codomain, a range of function, invertible function,
even and odd function, into onto and one to one function, a special function, copolymer, monomial, polynomial, trigonometric, exponential, logarithmic. So you have to integrate it. Or power absolute, greatest integer function, sum, difference, product and composite of function. So just learn the calculus, enjoy the calculus. Algebra of complex number, addition, multiplication, conjunction, polar representation, properties of modulus and principle, argument, triangle, inequality, cube roots of unity, geometric interpretation, a statement of fundamental theorem of algebra, quadratic equation with real coefficient, relation between roots and coefficient, formation of quadratic equation with given roots, symmetric function of roots, arithmetic and geometric progression. Arithmetic and geometric means sum of finite and arithmetic and geometric progression. In finite geometric series, sum of the first n natural number, sum of a square of cube of the first n natural number, logarithm and their properties, permutation and combination, binomial theorem of positive integral, index, properties of binomial coefficient, matrices. Very interesting topic, matrix. Enjoy, will find the rank, will enjoy much more. Matrices as a rectangular array of real number, quality of matrices, addition, multiplication by a scalar and product of matrices transpose, very much enjoyable, of matrix. Elementary row and column transformation, determination of a square matrix of the order up to 3, adjoint of matrix, inverse of a square matrix of order up to 3, properties of this matrix operation, diagonal, symmetric and skew symmetry of matrices and their properties, solution and simultaneously linear equation in 3 variable, probability and statistics, random experiment, sample space, different types of event, impossible, simple, compound, addition and multiplication rule of probability, conditional probability, independence of events, total probability based theorem, computation of probability of events using permutation and combinations, measure of central tendency and dispersion, mean, median mode, mean deviation, standard deviation and variance of the grouped and ungrouped data, analysis, the frequency distribution with same mean but different variance, random variable mean and variance of the random variable, trigonometry, trigonometric function, their periodicity and graphs, addition and subtraction, formulae involving multiple and submultiple angles, general solution of trigonometry equation, inverse trigonometry function, principal value and their geometric properties, analytical geometry, 2 dimension, Cartesian coordinates, distance between 2 points, section formula, shift of origin, किस तरीके से origin से shift हो रहा है, equation of a straight line in various form, angle between two lines, distance of a point from a line, lines through the points of intersection of two given lines, equation of bisector of the angle between two lines, concurrency of lines, centroid, orthocenter, incenter, circumcenter of a triangle, equation of circle in various form, equation of tangent, normal and chord, parametric equation of circle, intersection of a circle with a straight line or a circle, equation of circle through the points of intersection of two circles and those of a circle and a straight line. So just analysis each concept and you will feel confident.
Equation of parabola, ellipse and hyperbola in a standard form, their Fourier directions and eccentricity parametric equation, equations of tangent and normal. Locus problem, 3 dimensions, distance between 2 points, direction cosines and direction ratio, equation of a straight line in a space, skew lines, shortest distance between two lines, equation of a plane, distance of a point from a plane, angle between two lines, angle between two planes, angle between a line and the planes, coplanar lines, differential calculus. Limit of a function at a real number, continuity of a function, limit and continuity, sum, difference, product and quotient up to function, L'Hospital rule. You just learn it. 0 by 0, infinity by infinity. So all the things you have to apply. Limit of function, continuity of composite function, intermediate value of properties of continuous function, derivative of function, derivative of sum, difference, product and quotient up to function, chain rule, derivative and polynomial, rational, trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic function, tangent and normals, increasing and decreasing function, derivatives of order 2, maximum and minimum value of function, Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem, geometric interpretation of two theorems, derivatives up to order up to implicit function, geometric interpretation of derivatives, intermediate calculus, integration as the inverse process of differentiation, indefinite integrals of a standard function, definite integrals of the limits of some definite integrals and their properties, fundamental theorem of integral calculus, integration by parts, integration by methods of substitution and partial fraction, application of definite integral of to the determination of areas bounded by simple curves, formation of ordinary differential equation. So this thing you have to understood. If you need query, ask to us 7002099 Ask all your query, we will answer each concept. So behave like each individual teacher, physics, chemistry, math, biology. Learn with destiny classes. Homogeneous differential equation of first order and first degree, separation of variable methods, linear first order differential equation, vectors, addition of vector, scalar multiplication, dots and cross product, scalar and vector triple products and their geometric interpretation. So student, chemistry and math portion completed. Now we are moving towards the physics. Learn student, the more you will learn, the more you will get. जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे, जितना ज़्यादा सीखते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा. In the life, gaining the confidence is very much high. जितना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस, मजा करो ज़िंदगी में. So हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो. So student, if you have any query, ask and we will go ahead. Now student, general units and dimension, dimensional analysis, list count, significant figure, method of measurement and data analysis of physical quantities pertaining to the following experiments based on using vernier caliper and a screw gauge, micrometer, determination of using simple pendulum, Young modulus, elasticity of material, surface tension of water by capillary rise and effect of detergent, specific heat of a liquid using calorimeter, focal length of a concave mirror and a convex lens using UV method, a speed of sound using resonance column, verification of Ohm's law using
voltmeter and ammeter, and a specific resistance of material of a wire using meter bridge and post office box. Mechanics, one of the very interesting topic. In this we have to study the kinematics. So you will go to college, you will enjoy the mechanics, and you will enjoy the beauty of the mechanics. 1D, 2D, in Cartesian coordinate only, projectiles, uniform circular motion, relative velocity, Newton law of motion, inertial and uniformly accelerated फ्रेम ऑफ रेफरेंस. किस फ्रेम से आप देख रहे हो? एक्स फ्रेम, वाई फ्रेम, जेड फ्रेम, अल्फा फ्रेम, बीटा फ्रेम. विच फ्रेम से आप देख रहे हो? ट्रेन के फ्रेम से देख रहे हो, साइकिल के फ्रेम से देख रहे हो. ठीक है. Static and dynamic friction, kinetic and potential energy, work and power, conservation of linear momentum, mechanical energy, system of particles, center of mass and its motion, impulse, elastic and inelastic collision, rigid body, moment of inertia, parallel and perpendicular axis theorem, moment of inertia of uniform body with simple geometric shape, angular momentum, टॉर्क, कितना टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी विथ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ रिंग्स, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, कोलिजन ऑफ पॉइंट मासेस विथ रिजिड बॉडी, फोर्स्ड एंड डैम ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन, रेजोनेंस, linear and angular simple harmonic motion, Hooke's law, Young's modulus. So syllabus के जितने भी पॉइंट हैं, read, analysis, work and you will get it. Law of gravitation, gravitational potential, field, acceleration due to gravity, केपलर्स लॉ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिस तरीके से सैटेलाइट मूव करते रहते हैं, JSLV का आपने सुना होगा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, एस्केप वेलोसिटी, किस स्पीड से रॉकेट को छोड़ेंगे कि वो अपने अर्थ के ऑर्बिट को चला जाए पार करके. प्रेशर इन फ्लूइड, कितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करें, पास्कल्स लॉ को देखेंगे, बुयांसी को देखेंगे, सरफेस एनर्जी को देखेंगे, सरफेस टेंशन को देखेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रॉप, बबल्स एंड कैपिलरी राइज, विस्कोसिटी, पॉइजल्स इक्वेशन, एक्सक्लूडेड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड वर्क मॉडुलस ऑफ मैकेनिक्स, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम and its application, wave motion, plane wave only, longitudinal and transverse waves, superposition of waves, progressive and stationary waves, vibration of strings and air columns, resonance, beats, speeds of sound, gases, Doppler effect in sound, thermal physics, thermal expansion of solid, liquid and gases, calorimetry, latent heat, conduction in one dimension, elementary concept of convection and radiation, Newton's law of cooling, ideal gas law, specific heat Cp and Cv for monoatomic and diatomic gases, isothermal and adiabatic process, bulk modulus of gases, equivalence of heat and work, first law of thermodynamics and its application only for ideal gases, second law of thermodynamics. देखिए सब कॉमन है, आपका केमिस्ट्री में भी कॉमन हो जाएगा तो फिजिक्स में भी. टॉपिक के बारे में जानिए किस तरीके से टॉपिक ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज. ठीक है. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन, इफिशिएंसी, ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, एब्जॉर्प्टिव एंड इमिसिव पावर, किर्चॉफ्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट, स्टीफेंस लॉ, electricity and magnetism, Coulomb's law, electric field and potential, electric potential energy of a system of point charges of electrical dipole in uniform electrostatic field, electric field plus electric field Gauss law,
very much interesting, and it is usual in most of the part. Application in simple cases such to find field due to infinitely long state wire, uniformly charged, infinite plane sheet, and uniformly charged thin spherical cell. Capacitance, parallel plate capacitor with and without dielectrics, capacitor in series and parallel, energy stored in capacitors, Ohm's law, series and parallel arrangements of resistors and cells, Kirchhoff's law, and simple application, heating's effect of current, Biot-Savart law, Ampere's law. So like सोलेनॉइड में किस तरीके से करंट मूव कर रहा है. Magnetic field near current carrying a straight wire along the axis of circular coil and inside a long straight solenoid. Force on a moving charge and on a current carrying wire in a uniform magnetic field. Magnetic moment of a current loop. Effect of a uniform magnetic field on a current loop, moving coil, galvanometer, voltmeter, ammeter, and their conversion. Electromagnetic induction, Faraday law, Lenz law, self and mutual inductance, RC, LR, LC, LC are in series. Circuit with DC and AC sources. Electromagnetic waves. Electromagnetic waves and their characteristics. Electromagnetic spectrum, radio waves, microwaves, infrared, visual, ultraviolet, X-ray, gamma ray, including elementary facts about their usage. Optics, rectilinear propagation of light. किस तरीके से लाइट प्रोपेगेट करता है, किस तरीके से लाइट मूव करते रहता है. हर एक पॉइंट को आपको नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट. व्हेन यू मेक द नोट्स यू विल फील मच कॉन्फिडेंस. जितना ज़्यादा आप नोट्स को बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस रहेंगे. ठीक है, नोट्स को बनाइए, वर्क करिए. वेलकम टू डेस्टिनी परिवार. डेस्टिनी परिवार में आपका स्वागत है और मेहनत करते रहिए. जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेहनत करिएगा उतना ज़्यादा आप सीखते हैं. वर्क अ लॉट and you will get the success at the end. Refraction of a plane, spherical surfaces, total internal reflection, deviation and dispersion of light, bridge, thin lenses, combination of minors and thin lenses, magnification, wave nature of light, Eisen's principle, interference limited to Young's double slit experiment, electron is wave, electron is particle. So all things you have to understand. Diffraction due to single slit, polarization of light, plane polarized light, Bruegger's law, Polaroids, modern physics, atomic nucleus, alpha beta gamma radiation, law of radioactive decay, constant कितना decay हो रहा है, कितना half life हो रहा है, मिल लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी कितना एनर्जी होल्ड करता है, बाइंड करने के लिए कैलकुलेशन, फिशन एंड फ्यूजन प्रोसेस, एनर्जी कैलकुलेशन इन दिस प्रोसेस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे. बोर्स थ्योरी सेम केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंटिन्यूअस एक्सरे, मोस्टले लॉ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स. आर्किटेक्चर का रहने दीजिए, आप लोग देख लीजिएगा. आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट. So this is all for the today student. If you have any query, please ask. Join the Destiny classes. We will guide you all your queries. Call us, discuss with us, and learn. Get the success. जीवन में खूब सारे मेहनत करिए और खूब सारे एंजॉय करिए. जितना ज़्यादा आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, ब्रिंग अ स्माइल ऑलवेज ऑन फेस. जितना ज़्यादा आप चेहरे पे मुस्कुराते रहोगे उतना ज़्यादा आप
जीवन में सीखते हो। तो सबसे पहले आपको यही करना है, जे मेन का सिलेबस को जैसे मैंने कल यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन जे एडवांस, नीट का भी हो जाएगा आपका। अब सिलेबस के बाद मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंट को आपको नोट्स मिल जाएगा, हर एक पॉइंट्स का PYQ मिल जाएगा, हर एक पॉइंट्स का फिर आपका मॉक पेपर आ जाएगा। सो वी विल लाइक वर्क इन दिस वे, notes, then PYQ, then model paper. So this strategy we will follow for each point and you will surely success in the exam. Be engineer, doctor and देश का नाम रोशन करिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सक्सेस पाइएगा उतना ज़्यादा आपका हैप्पीनेस आएगा। So this is all for the today. So you have any query, please ask, feel free to ask and we will guide you. Thank you so much.